फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and it has been a good day for Shubman Gill. He has finally found some form, scored a brilliant 100. Could have added more to his total, but he was out for 104. इंडिया ने उसके बाद 399 का टारगेट दिया है इवेंचुअली इंग्लैंड को इन दिस टेस्ट मैच, इन द सेकंड टेस्ट मैच, और 67 पे एक विकेट थी जब स्टंप्स हुए इंग्लैंड 67 for 1 at stumps. They score carded. We'll talk more about this. Shubman Gill's batting, India's bowling, and what India will do on the penultimate day. I have with me Jamie Alter, Taus Rizvi, Chetan Narula, and Vineet Ramakrishnan joining me from Vizag shortly. Welcome to Cricket Next, everyone. Jamie, I'll start with you. Good knock, but should have added some more to that total. You know, the kind of stroke he played, that was a bit disappointed. Shubman Gill जिस तरीके से out हुए, that was a bit disappointed. What do you have to say? Look, we discussed this at length. The first 60 runs were very scratchy. 3 chance थे, 2 बहुत ही close DRS calls थे. 1 was umpire's call. So you can argue that Shubman Gill को 60 तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था. But the next 45 runs that he got after that break were much, much better. Shots like this we saw. And both Tosba and I said that, you know, while it's good for him personally, earlier on the show, it's good. We felt that this should have been 150 not out at stumps. So what was the first thing that Shubman Gill told Ravi Shastri after saying thank you? He's like, I left a lot of runs out there. Good for him. He's kept himself in the relevant discussions. But like we discussed, and then 2 hours later, he admitted this should not have ended on 109, 107. Why are you reverse sweeping? You should have really made a daddy 100. There are no cracks. There's marginal variable bounce. It's very good batting conditions. Good for him. He's not going to be dropped. Probably it'll be Iyer will be dropped, but not a great innings by any yardstick. And I know I'm being very harsh here, but this was an innings full of mistakes, technical, mental. Good for him, but nothing great from him. No. That's why, yeah, I do agree that वहाँ 3 lives मिले, 3 chances मिले उन्हें. But again, you know, someone who has been, you know, under some fire, he has now scored 100. तो confidence के लिए तो अच्छा ही है उनके. ठीक है, runs आ गए. Runs under the belt are something that is very important. रन ही तो इम्पोर्टेंट था यार शुभमन गिल के लिए. अदरवाइज यू वुड हैव गॉटन, यू नो, हम डिस्कस कर रहे होते कि यार अब आ गया है समय, विराट कोहली वापस आ जाएंगे, नंबर 3 पे खेलेंगे, आपके रजत पाटीदार और शुभमन गिल बाहर जाएंगे. दैट वाज इंपॉर्टेंट. सी दिस नॉक वाज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शुभमन गिल अलोन. उनकी जगह बनाने के लिए, ये टीम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्व रखता था. नहीं आते ना तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती, हम हारने के कगार पे होते. ऑल्दो आई एम नॉट हैप्पी दैट यार 399 इज नॉट द थिंग यार. दे शुड हैव क्रॉस 400. बट देन वो तो रहेगा ही हमेशा सवाल कि यार आप कहीं ना कहीं अनसैटिस्फैक्टरी कंटेंट नहीं रह जाते. क्योंकि क्रिकेट में अगर आप कंटेंट होने लगे ना तो फिर आप वो बड़े स्कोर या बड़े डैडी 100 जो ये जेमी भाई कह रहे थे, या जीत मुश्किल हो जाती फिर. तो शुभमन गिल का वही अच्छा मौका था. दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट टू प्रूव अदर्स, खुद को भी एक कॉन्फिडेंस जबरदस्त मिल जाता. 150, 175, देखिए आपके पास मौका था. दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. इंग्लैंड बॉलर्स भी डेडली नहीं लग रहे थे जो पिछले मैच में जैसे लग रहे थे. टॉम हार्टली, यार शोएब बशीर का इतना हाइप था, उतना भी ज्यादा इफेक्टिव, इतना भी ग्रेट नहीं दिख रहे थे. विकेट वाज फ्लैट. आपको समय भी मिल जाता, आपके पास ओपोनेंट्स भी अच्छे थे. अगर आप होते तो अक्षर पटेल भी होते, अश्विन के साथ भी मिल जाता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स काउंट इन होते. बट देन वो शॉट, देखिए जब क्रिकेटर या जब बल्लेबाज बैटिंग करता है तो मुझे लगता नहीं वो अपने रिकॉर्ड्स के बारे में सोचता है, या वो नहीं चाहिए. रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी जगह के बारे में, वो टीम सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए कि आप कहाँ थे, कौन से पोजीशन पे था. आप अगले मैच के बारे में नहीं सोचेंगे क्या मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, 100 बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो आई होप ये सब नहीं दिमाग में उनके आ रहा होगा, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही होगी, भाई मुझे टीम को ले जाना है, वो क्रॉस करना है वो विनिंग टोटल में. आई होप दिस वाज मस्ट हैव बीन इन हिज माइंड. अगर दूसरे फैक्टर्स थे कि भाई मुझे अपनी जगह बचाना है, तो अनफॉर्चुनेट. उन्होंने काम किया, एक हद तक सही काम किया, बट वो काम को आप और बड़ा कर सकते थे, और ज्यादा, यू नो, एक स्टेटस टीचर अपना बढ़ा सकते थे. मुश्किलों से आ रहे थे, क्रिटिसिज्म थे,
बहुत सारे फैक्टर्स थे। अगर आप 150 डैडी 100 मारते, जैसे जेबी भाई ने बोला, बड़ा स्कोर बनाते ना, तो आपका स्टेचर बढ़ जाता और कोई सवाल नहीं उठता अगले 2-3 मैच के लिए तो एटलीस्ट। मगर ठीक है, मिला तो मिला, इट्स अ गुड थिंग। अब इसको कैपिटलाइज तो बॉलर्स को ही करना है कैसे भी। 399 इज स्टिल अ गुड टोटल, बट द वे दीस गाइस हैव स्टार्टेड यार, 57 for 1, डर लग रहा है मुझे अभी भी। 400 रन का टोटल है ताउस भाई, ऑलमोस्ट। डर क्यों लग रहा है? नेवर नो डर नहीं। दीस गाइस यार। ओके चेतन भाई, बट यहाँ पे थोड़ा सा और लाइनअप की भी बात करूंगा मैं, बैटिंग लाइनअप की भी। एक लड़के ने 100 रन कर दिए, हम कहीं ना कहीं उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू नो, बड़ा 100 करना चाहिए था। जिस तरीके से जिस तरीके से आउट हुए, वो जरूर क्रिटिसिज्म का एक पार्ट बन सकता है, बट बाकी प्लेयर्स यू नो, बारिंग रजत पाटीदार, जिनकी बहुत अच्छी कैच ली फोक्स ने, बैटिंग ऑर्डर फिर अगेन अगेन देयर वाज अ फेलियर फ्रॉम द बैटिंग ऑर्डर। व्हाट डू यू हैव टू से? श्रेयस अय्यर की भी बहुत बढ़िया कैच थी जो बेन स्टोक्स ने ली हाँ। थी, और ये बैटिंग फेलियर हम फर्स्ट इनिंग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जायसवाल ने 200 रन बनाए और उसके बाद 40 रन किसी और ने भी नहीं बनाए। सो I mean, I don't think there's anything to repeat there. India's batting lineup is sick. Sick मतलब बीमार है इस टाइम पे, उसको कुछ इलाज की जरूरत है। But the good news is that Shubman Gill at number 3 is scoring runs. I mean, I think Shreyas Iyer has probably played his last test knock for a while. I'm hoping. I think he needs to go back and realize the value of staying at the wicket. हालांकि जब गिल फंसे हुए थे प्रॉब्लम में, रन्स नहीं बन रहे थे, तो what Shreyas Iyer was doing was actually right. He was rotating the strike. भाई सारा टाइम ही आप रोटेट करके खेल लो ना, बीच में जो बाउंड्रीज आ रही हैं। टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट पिकिंग योर मोमेंट्स. Shreyas Iyer tries to create his moments, so that is nah. He's trying to, I don't know what he's trying to do. I don't even think that's Bazball. Bazball is not just mindlessly attacking. Bazball is taking your opportunity and not regretting it. But ठीक है, अब अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो वो यही बोलेंगे कि मैं तो अपॉर्चुनिटी ले रहा था, I don't regret it. But I think the selectors need to send a message. The team management needs to send a message. KS Bharat, again, he has zero batting contribution. But I'm sure they'll be happy with the catch he took, which probably cements his spot in the third test match. Yeah, I don't know. थोड़ा fault management का भी है. I mean, Akshar Patel at 6 makes zero sense. Absolutely zero sense. अगर आपको श्रीकर भरत पे confidence नहीं है तो आप रविचंद्रन अश्विन को भेज दो. I think Ashwin at 6 would be a better option than Akshar Patel, because you're wasting Akshar Patel. ठीक है, he's scoring runs and everything. He can do that. I still think he's a. अगर आपको अक्षर पटेल को नंबर 6 पे खिलाना पड़ रहा है, that means your batting is not working out. He's not Ravindra Jadeja. Let's be very honest. And I think Akshar Patel, ठीक है, he can bat. Yeah. But again, you're wasting him. जैसे आपने उसको हैदराबाद में waste किया, आप उसको नंबर 6 पे waste कर रहे हो. I think he's somebody who can bat better with a number 9 or 10 or 11 than Ravichandran Ashwin. So Ashwin, you're wasting at number 8, and you're wasting Akshar Patel at 6. So ऊपर से नीचे तक, I think it's problematic at the moment. Rohit Sharma, not in the best of forms, I would say. I think he has a lot on his plate. I don't think, and I obviously don't think he's recovered from the World Cup shock. So yeah, ऊपर से नीचे तक problem है. Yeah. And on that note, I'll welcome Vineet to the live session. Vineet, few questions. What do you make of Shubman Gill's knock today? And also, what do you make of India's batting on the whole? Because, 399 should have been at least 450. Target of 399. 50-60 run उसमें ज़्यादा होने चाहिए. First, to answer first question, what do I make of Shubman Gill's knock? At least Shubman Gill को थोड़ा confidence मिला होगा तो अच्छी बात है, but I didn't see much of there because it was scratchy at best. Got 3 reprieves because he was lucky to have scored those runs. And then when he started scoring runs, वो easily दिख रहा था यार. Ryan Ahmed shot करा रहे थे या तो 2 full करा रहे थे, जो slog sweep मिले, they were free shots, so any batter could have put it away. It was scratchy at best, to be honest. ठीक है, रन मार लिया. As I said, उनके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए अगर अच्छा है, as you gently say, a player is 1 knock away from regaining form. अगर वो बात है तो अच्छा है, well and good, but not that good of an innings. ठीक है, 100 मार लिया. That was a bedrock of 255. Again, you could have done better from in terms of overall India's batting. Again, the way Shreyas Iyer got out,
आराम से नीचे की तरफ खेल सकते थे यार. He got a star 29. हम शुभमन गिल की बात कर रहे थे कि last 12-13 innings without a 50 to his name. श्रेयस अय्यर का भी वही मामला है अभी. Last 50 उनका आया था मीरपुर में 2022 against Bangladesh. So he's also under a bit of strife. Again, it was a shot that he should not have played, I would say. Then again, it was a good catch. I mean, that was one of those cases. अगर वो शुभमन गिल वाला luck factor अय्यर के पास होता तो that catch, I mean, if it was not Ben Stokes, that would not have been a catch. So that was one thing. Patidar again, Good catch. Again, it was not good catch. Again, good catch. Should have been, if he's good at that square cut or he's trying to do that, should have applied himself better. Like he should have bent थोड़ा और उन्हें पता है ball low रह रही है. Still वो किया इसीलिए वो under edge लगा. Good catch. Rohit Sharma, peach of a delivery from Anderson and Jaiswal also. I mean, it was a setup. So James Anderson की जो तो पहले 2 विकेट थे, you could say कि ठीक है, nobody could have done much about it. But उसके बाद, and especially I was baffled at the way Ravichandran Ashwin was going about his business after T. मतलब अब रुक के खेल रहे थे, he just stalled the game there. I mean, at least यार run मार के out हो जाते. Had no clue. Jasprit Bumrah playing out 25 deliveries for 0. Shrikar Bharat again an awful batting, but then again, the reason India is still ahead is because of the Jasprit Bumrah spell. जिन्होंने आपको 170 का लीड दे दिया था, you have done decently enough, I would say, to get another score 227 runs. I would still say 398 is a very, very, very good total. I was saying 350. Because there's some technical issue with the Vineet. Okay, I'll come to you, Jamie, for this. एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर आउट हुए, ओके, दैट वाज़न्ट रियली रिक्वायर्ड. ओके, आई हैव विनीत विद मी. ओके, सो दैट वाज़न्ट रियली रिक्वायर्ड. लेकिन आज कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी समझ आया. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि ठीक है, अब मैं मार के खेलूंगा. बिकॉज इससे पहले की जो 3-4 इनिंग्स थी, देयर वाज अ सेंस ऑफ डिलेमा. फ्रंट फुट पे खेलना है, पीछे खेलना है, शॉर्ट बॉल आएगा, लेंथ डिलीवरी आएगा, क्या आएगा. देयर वाज अ सेंस ऑफ, देयर वाज अ डिलेमा उनकी बैटिंग में. आज शायद वो थोड़ा सा बेटर दिख रहा था. एंड ऑब्वियसली 100 मार्क्स टू द कैच हियर दैट Stokes took. What do you have to say? Hello, am I audible? Yeah, Vineet, I'll just come back. Just come back. ठीक. Okay. I'll say exactly what I said in the lunch show, and Tazbai was there. It's 11:01. There's 29 minutes. What the hell are you doing trying to hit, right? Forget the catch. I agree. We've discussed it. The catch was great. He wanted to go over mid-on. Where was he caught? Near long off. Yeah. My friend, it's 29 minutes till a flipping break. What are you trying to play for? I feel like I'm repeating myself when I go back to the shot. He played 3 overs into a session in Hyderabad. आपके नाम के पीछे 35 रन है, 135 रन नहीं है. आज आपके नाम 29 थे. How are you finding positivity in that shit shot that the guy played? Vineet's right. हम गिल के पीछे पड़ रहे हैं. इस भाई साहब ने क्या उखाड़ा है यार. ये 12 मैच से 35 तक नहीं पहुंचा. And you are saying there's clarity in that shot. No, he's playing aggressive. What clarity? The guy, he's not fit for test cricket in this current format. We discussed for 35 minutes, Tazbhai. We talked about इसको रणजी भेजो. विनीत ने क्या बोला? रणजी क्या उखाड़ेगा? I checked. He scored 48 or 48 against some average team. Vineet was right when he discussed it. इसको रणजी भी खिलाओ. इसको break दे दो. Ranji is not the solution. 12 innings, you've not got to 35. Soumya, he's been out edging. He's been out 2 innings because he was caught at cow corner slog sweeping. He dobara kar rahi hai. Like Tosbhai said, sending these guys to Ranji is a punishment. It's a punishment. आप देश के लिए खेल रहे हो और आप 3 पारी में 2 बार डीप पे कैच हो रहे हो. Fantastic to Ben Stokes. ये पहली बार नहीं है Ben Stokes ने कैच लिया. Why are you trying to go downtown with 29? I defended this joker for the last I don't know how many months. You cannot defend this guy. भाई ये टेस्ट क्रिकेट है. As if the Rehan Ahmed shot 2 innings ago was not enough. This was worse. But 40 रन तो बनाओ फिर ये शॉट मारो. 29 कर क्या रहे हो? I blame this Vikram Rathore. I blame Rahul Dravid. They can't see it. What are we doing? India lost 6 wickets for 44 runs, and we're happy with the Shubman Gill 100. India ये मैच हार सकती है. Yeah, the amount of time they have. Yeah.
Yeah, Vineet, what you were saying. You can continue, please. No, I was saying the same, pretty much the same thing on that IR thing, as I mentioned. Needless shot, and again, that last session of play was quite baffling. 28 runs were scored in what, 14.3 overs, losing 4 wickets. I don't know what Ashwin was trying to do. Bumrah playing 25 deliveries for a duck. Srikar Bharat, that awful shot. I've been defending the guy कि उसको देना चाहिए. अब तो मेरा भी हो गया कि I don't know KK whoever Arkamandi की ध्रुव जुरैल को डाल ही दो. But that was awful, yaar. I mean, they just stalled the game there. They just stalled the game, which was not needed. They should have been a bit more aggressive. Bowling इतनी खास नहीं थी, and again the pitch had no demons as such. And this is the reason. I mean, ये आगे England के लिए अच्छा chance इसलिए ये है कि the pitch has not deteriorated the way we all expected it to. Variable bounce है, that would be the big factor. Come day 4, variable bounce. How Ashwin and Akshar Patel and Kuldeep Yadav are able to exploit. That would be the key. Otherwise, अगर flat आप करोगे तो भाई लगने वाली. And one other factor, Mukesh Kumar, 2 overs, 19 runs, bowling full. वहाँ बुमराह आपको जान लगा कि बिल्कुल टाइट bowling कर रहा है, आप यहाँ पे रन दिए जा रहे हो. That is one of the reasons why England got off to the start they did, 50 in the 11 overs. It's a good thing that Ashwin, who looked flat in the first innings, got the ball to bounce or wicket wicket ले लिया. That's confidence inducing, confidence boosting. If he can take this over to day 4, that will be great. I'll still say, look, it's still India's game to lose because how much Bazball can sustain? That's the question. 1 घंटा, 2 घंटा, throughout the entire day, I'm not really sure. But then again, it is England team at best in 2022. याद आता है. That is a different pitch altogether. But anything could happen. The key would be again Bumrah in the first hour of play. थोड़ा जब damp रहेगा, moisture रहेगा, if he can give breakthroughs. Mukesh Kumar for some reason, if he can get a breakthrough here and wicket थोड़ा मिल जाए उसको आड़ा तिरछा कोई खेल के, India has a chance. Otherwise, look, this is going to be a good finish. Day 4 खत्म होगा. India ball out करेगी या तो England जीतेगी. And defending almost 400, and we are still saying India has a chance. Okay. No, I'm saying India does have a very good chance, and that is what the Bazball or the approach has done. That is what the England approach has done. James Anderson came in the press conference. He said that Brendan McCullum told them कि अगर 600 भी होगा target, even if the target is 600, we will go for it. So he said that we are clear in how to go about it. We are going to chase this down. We are not going to, back down or be defensive even if we lose wickets. And that's a big issue. Not issue. That's a big, threat for Team India because this is the kind of approach which takes you to things that are out of bounds to you. This team has done that. They have done the unthinkable, and they can repeat it if India, let go or are not relentless. I'm still saying India are hot favorites here, but ताउस भाई England, the way they play. यहाँ पे ताउस भाई आपसे एक चीज पूछूंगा. Is it more Bazball or Rohit's captaincy that can, cost us the game? Because Robin से. am I audible? Yeah. Yeah. Can you hear me? Pardon? No, yeah. So I'm क्या saying, पूछ रहे? it is more about Bazball, the approach of the England batters, or is it about Rohit's captaincy, which can create a bit of a problem for us? Bazball complementing Rohit's defensive captaincy यार. England तो England मतलब 399 मुझे बड़ा स्कोर नहीं लग रहा है अगर बैसबॉल तरीके से और इंग्लैंड जिस तरह से विकेट है जिस तरह से इंग्लैंड शेप अप कर रहा है. आई मीन द स्टार्ट दैट दे गॉट 57. आपको 57 ने अभी तक 2 विकेट निकाल लेना चाहिए था. आपको मैच में अगर टॉप पे होना चाहिए था तो. एंड मुकेश कुमार आई एम श्योर वुड नॉट हैव डन इट अगेन. यू आर रिलाइंग ऑन जसप्रीत बुमराह मैजिकल स्पेल एंड आई डोंट नो वो मैजिक कितनी बार रिपीट हो सकता है क्योंकि देखिए डेस्टिनी भी साथ देनी चाहिए ना आपको. तो सी दिस इज अ डिफेंडेबल टोटल एंड अश्विन अगेन we'll have to come back to Ashwin because he's been a regular. He knows the Indian conditions. He knows how it works. Then we have Kuldeep Yadav to complement him. तो बार-बार अगर हम जसप्रीत बुमराह के पास बार-बार जाते रहेंगे तो it will be like आप बर्डन कर रहे हो बंदे को रिस्पांसिबिलिटी से और टू मच ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज उसका एक तो बेचारे का एक्शन ही इतना जबरदस्त है कि अगर आप ज्यादा फोर्स डालोगे बर्डन डालोगे तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा. तो यहाँ पर जिम्मेदारी है स्पिनर की. यहाँ पर जिम्मेदारी है रोहित शर्मा कप्तान की और कप्तान को अटैकिंग होना पड़ेगा और दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी अटैकिंग टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट. अब जरा सा आपने ढील दे दिया जरा सा आप लूज आउट हो गए ना तो भाई वो चौके छक्कों के साथ और सिंगल डबल्स निकाल के आराम से मैच खुशी खुशी और पैदल मतलब वॉक इन द पार्क हो जाएगा इनके लिए.
तो आप वो प्रेशर रिलीज नहीं करने देने का. दैट इज व्हाट रोहित शर्मा's रोल विल बी, नॉट टू गिव देम एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपको रखना है कि भाई आप 150 डिफेंड कर रहे हो. आप अगर वैसा रखोगे माइंडसेट कि हमें 150 डिफेंड करना है, तो आपके पास चांस है मैच जीतने का. क्योंकि आप 150 डिफेंड करने का एक साइकोलॉजिकल वो रखोगे, देन यू विल स्टार्ट अटैकिंग. आप अश्विन को बार बार डालोगे, आप अश्विन के लिए फील्डर्स राइट स्पॉट पे रखोगे, आप रन लूट आउट नहीं करोगे इजीली, आप कुलदीप यादव को चढ़ने का मौका दोगे. बीच बीच में जसप्रीत बुमराह आके अपना स्पेल, मैजिकल स्पेल या रिवर्स स्विंग इफेक्ट में लेके आएंगे. तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम राइट नाउ. 399 इसलिए हम बोल रहे हैं. कोई और टीम होती, ऑस्ट्रेलिया भी होती या कोई और टीम होती ना, तो हम कह देते यार 399 ठीक है, हम जीत सकते, वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. But then this is England, yeah. Again, once again, this is England. This team has the experience. This team has wherewithal to chase any target, yeah. And when you have this kind of wicket and Rohit Sharma's captaincy, क्यों नहीं कर सकता England, यार? Okay. Let's move on to the comments, please. Can I have the first one? Okay, Kuldeep Sharon, let me. ICT में वो कौन सा जौहरी है जिसने मुकेश, केएस, आवेश मैनी प्लेयर्स को तलाश किया है? चेतन भाई, यू वांट टेक दैट? आई मीन आवेश को ऐसा नहीं क्रिटिसाइज कर सकते. यू हैवंट सीन हिम इन रेड बॉल. चेतन भाई, I don't have anything to say to this. okay, the next one please. Sports fans still can't figure out Mukesh's inclusion in 11. Bharat too has failed to contribute with the bat. Jurel should be given a chance. Jimmy, quickly, your thought on this? Yeah, the first statement. I mean, I said it after the 2-day South Africa second Test match. Play him in these extreme conditions. Maybe play him in New Zealand. Don't play him in India. And if I can see that a month ago, the guy offers no value in Test matches in India. Yeah. So, See, I don't know why they're playing. The only thing Mukesh should do right now is learn from Jamie Anderson, यार. Jamie Anderson, swing कैसा नया ball use करना चाहिए. That is the only thing he should. टेस्ट मैच में थोड़े लर्न करेगा यार. टेस्ट मैच खेल के थोड़े लर्न करेगा. नहीं, बाहर से देखकर मैं बोल रहा हूँ. Okay, Priyanshu, Iyer, Mukesh and KS Bharat should be dropped in the next match. How's why? अय्यर, मुकेश, केएस भरत एक साथ दे दिया. अय्यर तो जाना ही चाहिए, मुकेश तो जगह क्या बनेगी यार. भरत, आई थिंक भरत, विनीत शुड आंसर दिस यार. भरत वो तो कह ही रहे ना, वो तो बोल ही रहे जुरेल को ले आओ. वो तो ही इज तो फेड अप नो और डिफेंडिंग केस. अब तो जुरेल को लेकर आ जाओ. जिस तरीके का शॉट खेला ना यार, मतलब जस्ट हद कर दी. And from hometown hero to hometown zero, मतलब पूरा बेड़ा गर्क कर दिया भाई ने. I have respect for Riddhiman Saha यार. What a attacking batsman he was यार. I mean, ये बढ़ जाता है respect साहा के लिए, और बढ़ जाता है. See, देखो, एक तो आपने एक important stumping भी छोड़ी थी, फिर वो आपके दिमाग में, फिर आप खुद ही कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो अपना. आप कंजर्वेटिव इतना खेल रहे हो, आप फ्री, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. तो वो माइंडसेट मुझे पता नहीं कहां से आ रहा है. इतना दब के क्यों खेल रहे हो आप? व्हाट इज द प्रेशर गोइंग ऑन? इट्स मोर अबाउट मेंटल, आई गेस, दिस गाय भरत का, rather than the next one please. नहीं, मेंटल नहीं, it's more about tactical and technically issues हैं वहाँ पर बहुत सारे. Okay, next one please. Sarat Chandra, the more we are scared of tomorrow is because of Bazball or lacking of assistance we need from the pitch. Chetan bhai. No, there is assistance in the pitch. Hartley was turning the ball. Rehan Ahmed was turning the ball. There is a lot of bounce in the ball. There is a lot of variable bounce. कुलदीप की काफी बॉलें फर्स्ट थिंग्स में उतनी रही थी. रेहान की अहमद पे लो बाउंस है. एंडरसन की बॉल पे लो बाउंस है. आई थिंक एक एंड से जहाँ पे रोहित शर्मा बोल्ड हुए थे, उस एंड पे ऑफ स्टंप पे भी देयर इज अ बिग क्रैक व्हिच हैज कम अप. सो ऐसा नहीं है पिच में. आई थिंक देयर इज इनफ वियर एंड टियर एंड टुमारो वी विल सी अ बिट मोर. But at the same time, the pitch also is good enough to bat. And the way England bat, they're not going to leave anything out there. The ball is still fresh, the ball is still new. They're going to make it count. नई ball पे run अच्छे बनते हैं. And I think it's going to be a factor कि कब reverse swing start हो रहा है, क्योंकि बुमराह तब गेम में आएंगे.
I don't think Bumrah will come into the game before that. So yeah, it just depends. और जो आउटफील्ड है वो काफी अच्छा है, तो I'm not sure क्योंकि हैदराबाद में 18 या 20 ओवर से ही रिवर्स स्विंग आ गया था. इसमें 30-35 ओवर लग रहे हैं रिवर्स स्विंग आने में. So that's one thing. And दूसरी चीज ये है कि पहले इनिंग्स में बाउंस की वजह से इंग्लैंड ने रिवर्स स्वीप नहीं खेला. बहुत ज्यादा बाउंस है, और आज भी शायद बेन डकेट ने एक रिवर्स स्वीप खेला है और उसमें उसकी बॉल टॉप एज लेके थर्ड मैन पे चली गई. सो इफ देयर इज बाउंस देन इंग्लैंड विल नॉट प्ले द रिवर्स स्वीप. अगर बाउंस बैठ जाएगा तो रिवर्स स्वीप बाहर आ जाएगा. तो बाउंस अभी है, तो ऐसा नहीं है कि पिच में असिस्टेंस नहीं है, पिच में अभी भी असिस्टेंस है. Okay. Next one, please. Ankar Biswas, till when will Rohit play those cute 20s, 30s and will be okay with it? Vineet. We have to be okay with it because he's the captain. As simple as that. Like nothing more to add to that. He's the captain. Yeah. Okay, sportsman. Rohit himself is scoring not any runs since long time. He is most experienced batter. He needs to lead from the front. Jenny. I mean, Vineet is spot on. But the fact is, kab tak, last 2 years, 13 innings, one score above 45, and that was a brilliant 120. But if you're crossing 45 in one of 13 innings, I'm not even going into this. This was a very good ball. Are you away from criticism because you're the captain? I'm putting this man in the same category as Iyer and as Shubman Gill. 13, and I think ये विनीत ये शायद 12 या 13 innings है इसका, going back to Mirpur. Yeah. Let's add on one. Let's say 13. Let's put the captain. Let's put the number 3 and the number 4 plan. Let's all say 13 innings. Abysmal numbers for all three. So, I mean, Rohit Sharma is 37. Let's hope he gets some runs. I personally don't think this team has any chance of even getting to the WTC final. So once that clarity comes through, you have to move on, because one score above 45 in 2 years at home, I'm talking about, yeah, not good enough for me. Yeah. And the point is, अगर रोहित शर्मा पे सवाल भी उठेगा ना, it has to be wholesale changes. कोई बिल्कुल. ऐसा तिगड़म करना होगा, जैसे let's say just assume कि ये हार जाती है सीरीज इंडिया, then you will recalibrate and you will think कि भाई अब तो हमें wholesale changes करने पड़ेंगे, and that is the only time or that is the only scenario when you would probably think about dropping or leaving Rohit Sharma out of this test 11 or squad, whatever it is. Till that time, अगर खुदा ना खासा कल भी जीत गए किसी ना किसी तरीके से, सीरीज भी आपने राजकोट पे कुछ भी कर दिया, ड्रॉ कर दिया, he'll still continue on, and these 30s and 40s we can all discuss about it, but कैप्टन वही रहेगा और वही खेलते रहेंगे उस हिसाब से. और एक आधा आएगा इस सीरीज में, एक आधा बड़ा स्कोर आएगा, हम अगले 10 इनिंग्स के लिए उसी के बारे में बात करते रहेंगे. बेस्ट एवर नॉक इन दीज कंडीशंस, ये एस्ट्रिक्स लग जाएगा इन दीज कंडीशंस, ये यहाँ पे 2 साल पहले 1 साल पहले अगेंस्ट अटैक, ये वो लगता रहेगा और चलता रहेगा. फॉर होलसेल चेंजेस टू बी डन, यू नीड टू धक्का लगना चाहिए, दौर का धक्का लगेगा तभी होलसेल चेंजेस होंगे, तब तक ये वहीं पे रहेंगे, चाहे 30 मारे, चाहे 40 मारे, चाहे 20 मारे. And they went, just to add, they went after the soft targets, na? The Rane Pujara. Absolutely, yeah. But he's got a massive backing behind him, yeah? That's it. No, I think that's a little unfair on Rohit, to be very honest. Very unfair. Okay. As a batsman, he still has a lot to offer. I mean, Nagpur test, I mean, that was a very big 100 that he scored in the first test at Nagpur. Absolutely. But Chetan, that's one score beyond 45. Yeah, that's one score beyond. Remove the people who back him. There's nothing. Let me finish here. The point is, my captaincy se usko hata do. That's not a problem. But I'm still saying he's just in a bit of a bad form at the moment. If it continues for a while, continues throughout the series, then you can think about it. And then at the same time, you need to have an option for opener, which is probably Ruturaj Gaikwad, because Shubman Gill now has a little more rope. But more importantly, you also need a captain. And at this moment, captaincy, I don't even think he has a great captaincy at the moment. But I still think unless and until he says, okay, boss, mera ho gaya test cricket se, I think, I mean, आप देखो, ठीक है, वेस्ट इंडीज में किसने रन बनाए यशस्वी जायसवाल के अलावा, साउथ अफ्रीका में किसने रन बनाए. सो यस, वी आर काउंटिंग दोज मैचेस, बट लुक एट द पिचेस इन साउथ अफ्रीका, लुक एट वेस्ट इंडीज, वहां पे किसने रन बनाए. सो
I think that's a little unfair on Rohit at the moment. Okay, I'll quickly take a comment from Tausve because Rohit, can I say something? sorry. Can I say something on Rohit? Yeah. Go ahead. या सो रोहित आई बिलीव रोहित का आपने जितना भी हंड्रेड्स देखा है देखिए वेस्ट इंडीज से शुरुआत होके वेस्ट इंडीज का अटैक कैसा था उसके बाद आपने पैचेस में देखा है 100 जो 10 100 आए हैं पैचेस में 55 टेस्ट मैचेस में पैचेस में आए और साथ में आप इंग्लैंड में कोई स्कोर देखोगे साउथ अफ्रीका में देखोगे सो ऑल हैव बीन हफ्ड एंड पफ टू 100 और या तो अटैकिंग शॉट्स खेल के यहाँ पर रोहित शर्मा राइट नाउ ही नॉट दैट कॉम्पैक्ट बैट्समैन नॉट दैट टिपिकल test cricketer who would go out there, look compact, play his cover drives, textbook drives, play like a Aiden Markham classy drives. यहाँ पर रोहित शर्मा का अगर आपको एक रोल मैच विनिंग रोल बनाना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर विराट कोहली के साथ रखना है. गो आउट देयर, प्ले योर नेचुरल गेम, डोंट गेट इनटू दैट शेल जो आप ये मैच में देखे हो. बेसिकली कंजर्वेटिव देखे हो, आप अपना जो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो. The only way Rohit Sharma can succeed right now is to not play that typical test cricket kind of आप express करो, play freely because that is the only way you can play test cricket. आप defend करोगे या आप conservative approach लाओगे तो नहीं हो सकता है. Okay. I have a last question for you, Tausve. उसके बाद आप जा सकते हो. Another question. Shubman is asking, Taus, Shreyas is playing in anti-Khadu's Mumbai style, gets bored, not ready to spend time on crease, guys making shot out of nowhere. Absolutely. I mean, खड़ूस वही मैं बोल रहा था. खड़ूस is like Bazball जो है, Bazball अगर इसका नाम है तो मुंबई क्रिकेट का खड़ूस नाम है ना. एवरी मुंबई का इज सरप्राइज दे यार इतना सॉफ्ट डिसमिसल नहीं होता है कोई खड़ूस बैट्समैन का. खड़ूस इज मोस्ट मेंटल स्टेट. आप कितना स्टर्बन, कितना ग्रिटी, जैसे यशस्वी जायसवाल ग्रिटी, खड़ूस, आप विकेट आसानी से नहीं दे सकते. एंड दिस गाय इज फ्लैम्बॉयंट. Shreyas, I mean, you'll see a lot of batsmen coming from Mumbai, Prithvi Shaw या श्रेयस या जो भी नए बैट्समैन वो खड़ूस स्टाइल में नहीं खेलते कि यार विकेट आसानी से नहीं बनेगा. इट्स नॉट लाइक, बट दीस गाइज आर लाइक, आई मीन यू कैन से T20 क्रिकेट का असर है जो हर अभी अभी क्रीपन होगा धीरे धीरे. जो एटीट्यूड जो मुंबई का खड़ूस टिपिकल माइंडसेट है वो मिसिंग लग रहा है. और अगर आपको खड़ूस खेलोगे ना आप तो आई मीन यू विल स्कोर बिग रन यार. तो या दैट इज मिसिंग. एब्सोल्युटली आई एग्री विद शुभम गर्ग. इट्स मिसिंग बिग टाइम. और वो आपको मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा मेंटली और टेक्निकली. वो आप मुझे लगता है राहुल द्रविड़ के साथ काम करने पर हो सकता है क्योंकि विक्रम राठौर तो कहीं दिख रहे नहीं मुझे इस वक्त. Okay. Well, thank you, Tausve. Thank you for joining us. आपसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे. Thank you, bye. Next one, please. Next one, please. Sportsman Anderson Bumrah showed they don't need seeming conditions to prosper. Need one more Bumrah magical spell tomorrow. Jamie, you have been talking about this. What are your thoughts? Absolutely. If India have to win tomorrow, it's going to be down to Bumrah. I don't see any other bowler doing anything on this track except Jasprit Bumrah. Okay, next one, please. Shubham, Chetan, considering Indian batting against this England bowling, do you think India can win this series? That's a very, very tough question to answer. I mean, I think it'll depend on what kind of pitches, what kind of pitches. I mean, अगर अभी पहले दो मैच की अगर आप बात करो तो I would say no. But then again, there can be turning points. I mean, Jaiswal is in a good form, good nick now. Gill has got some confidence behind him. Rajat Patidar has not looked that bad. And KL Rahul is probably going to come back, so he was in good touch. So I don't know, yeah. It's a very, very. I think the series is going to be very close. I think it's going to be closer than what we anticipate. यार ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक वो प्रेडिक्शन है पहले वाली तो नहीं रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ये 2-2 ना हो जाए और फिर 3-2 हो, मतलब धर्मशाला में ड्रॉ कोई मैच नहीं होगा अनलेस देयर इज अ बिग वेदर इंटरवेंशन. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो भी इसका स्कोर लाइन होगा, समझ लो अगर 4-1 होता है इंडिया के फेवर में या 4-1 इंग्लैंड के फेवर में होता है, तो आई डोंट थिंक इट विल रिफ्लेक्ट कि किस तरीके का कॉन्टेस्ट हुआ है. 4-1 अगर इंग्लैंड के फेवर में होता है तो तब तो शायद कहीं ना कहीं एक कोई न्यूक्लियर धमाका हो जाएगा. बट इवन इफ इट्स 4-1 टू इंडिया, आई डोंट थिंक कि इट विल रिफ्लेक्ट द वे इंग्लैंड हैव प्लेड. एंड लेट मी जस्ट टेल यू, अभी तक 7 दिन का क्रिकेट हुआ है एंड इंग्लैंड हैव बीन द बेटर साइड. तो अगर आपको उससे जवाब मिल रहा है तो आई डोंट थिंक इंडिया कैन विन द सीरीज. Okay, next one, please.
Varun is saying Gill's 100 is only to save his seat in the team. He should have played on till the dawn. Yes, we have talked about it at length. Varun, next one, please. Sportsman, Rohit can't take backseat like last match. He needs proactive captaincy from him. Vinit. Yes, yes, of course, he needs to be proactive. Yeah, you know that England are going to go and try to chase a target, and they'll go hard. And you cannot be passive like how you were in Hyderabad. You have to be proactive. You have to take risk. Field placements, चाहे वो field placements हो, चाहे being persistent with a particular bowler. Be it an Ashwin, be it a Kuldeep, you need to give attacking fields to these players. I mean, it's as simple as that. You need to look at to take wickets. That's about it. You cannot contain. You cannot defend this total. ऐसा नहीं है कि 2 दिन में बस खेलते रहेंगे नहीं है. 10 विकेट लेना है आपको तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव. लुक एट बेन स्टोक्स यार, वो हर दूसरे ओवर तीसरे ओवर में कुछ ना कुछ फील्ड चेंजेस यहाँ वहां कर रहे थे. गिल अपने 100 उन्होंने 100 किया. ही न्यू ही रियलाइज कि यहाँ पे विकेट चाहिए. फील्ड प्लेसमेंट किया वहां पे. सीधे अंपायर के पीछे एक बंदा खड़ा था, फिर आगे लेकर आ गए. Tried to tell him to access that area, at 45 कि भाई ट्राई तो कर. एंड गिल वेंट फॉर दैट. उन्होंने वो रिवर्स मारा जो पूरे मैच में उन्होंने नहीं मारा था. So Ben Stokes did those things. That was a wicket out of thin air. उनको लग नहीं रहा था. Against a run of play आया था. That was his tactical, acumen there. Rohit Sharma will have to come up with something like this if the England batters are trying to enforce themselves on. थोड़ा सा bravely तुम्हें करना पड़ेगा. थोड़े orthodox field setting हो, चाहे getting your bowling changes to be quick maybe, or be persistent. Whatever you have to do, you have to be really proactive. You cannot be passive as you were in Hyderabad. Okay, Vinit, I have a question here from Athar. He's asking, is Joe Root fit enough to bat? Any update on Joe Root? So yes, the update on Joe Root is he will be batting. He will be batting. ऐसा कोई major issue नहीं है. The reason why I think Rehan Ahmed came in was James Anderson said 2 reasons. One, they wanted to save him, थोड़ा rest देना चाहते थे, and plus again there was no point. 2-3 ओवर बचे थे तो they got in Rehan Ahmed. But yeah, James Anderson ने कहा है कि Joe Root will be available. He will have a larger role to play with the bat. So yes, Joe Root is available. He will play tomorrow if Joe Root was needed. not even slated to come. Na? It was only Pope at number 3. Oh yeah, Oli Pop, yes. Okay, next one, please. KK, how they are so much confident. There's so much confidence, and James Anderson is saying we will back ourselves of chasing down this target with 70 overs, and they thought actually 600 run target. So much ahead in thinking. Basically, No, KK that's saying, the process. That's the process that this camp is going through. उन्होंने कहा कोई भी target हो, we will go for it. 600 अगर होता, they'll say कि we will still go for it. ऐसा नहीं कि हम back foot पे जाएंगे. तो 400 is they'll anyway go for it. So that was the mindset. They're just talking about the mindset of what Brendan McCullum, Ben Stokes, and this England team are thinking of. That they'll go for it. They are not going to be on the back foot or थोड़ा defensive खेलेंगे, wicket चलेगा. They'll still go for it. yeah. And that is Bazball. Bazball is not going and hitting 4s and 6s. Bazball is about Yeah. the mindset, is about the thinking. So बहुत सारा बहुत सारा जो था सवाल थे हैदराबाद के बाद कि ये बैसबॉल नहीं है, ये बैसबॉल नहीं है. It was proper baseball. Baseball is about thinking. It is not about कि आप जाओ और चौके छक्के मारना शुरू कर दो. That's not baseball. Basically, an aggressive kind of an approach, like to go and get target. Okay, Pranshu is asking Chetan bhai, why so defensive fields? Not even 2 slips for Rehan in last over. Why open bowling with Mukesh? Open bowling with Mukesh was because Jasprit Bumrah bowled a very good first over, तो उनको लगा कि मुकेश भी इतना अच्छा ओवर करा लेंगे. तो इसीलिए that's the reason why. And why so defensive fields? Because I don't know. The captaincy has been not very on the mark. Not even 2 slips for Rehan in last over. Yeah, I mean he was not playing the shots for slips, तो शायद उसको देख के उन्होंने slip हटा दी थी. But again, the captaincy has not been very proactive. एक चीज और भी होती है कि आप expect कर रहे हो कि किस तरीके की shot वो खेलेंगे. तो Rehan was not blocking. He was absolutely not blocking, and I don't think any of the English batters are going to block until James Anderson comes out to bat or Shoaib Bashir comes out to bat. और वहाँ पे भी blocking करने, और जब वो batting करने आएंगे तो blocking करने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा. I think it was also because of the kind of shots he was trying to play. He was taking on the bowling यार. 2 ओवर के लिए बैटिंग करने आया था, फिर भी चौके छक्के लगाने में लगा हुआ था. तो yeah, but again the captaincy hasn't been
it has been better than Hyderabad, but Hmm. not really. Not I Remark. won't call it great captaincy. Yeah. 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 Okay. Next one, please. Dravid management remove Saha, Pucci, Rahane, Hanuma cause of their form or anything else. KK. Well, let's not get into that kind of a discussion. I mean, okay, Jason, Jamie sir, how much of control does Dravid has on this team? Inclusion of the likes of Sky, Ishan in the past when it made no sense. Do you think the captain has his say often, who has no clue about Test? That's a couple loaded questions there. I don't know how much control Dravid has because a coach, anyways, doesn't have as much control. So I don't have the answer. The two names you've taken play for a certain franchise, and the captain of that franchise happens to captain India. So 2 plus 2, very obvious why they got selected. Do you think has the captain has a say often? Absolutely, he does. Yeah, to my mind. Okay. Last three comments, please. Next one. Shubham Garg. Chetan, is it going to be similar to 2018 India versus England series where India missed clutch moments, ended with 4-1 loss? I don't know. I mean, I think the team is very different from 2018. Yeah. So I can't say whether they are missing clutch moments. They're just not performing first test match. I don't think they missed clutch moments. They just didn't perform. Shreyas Iyer throwing his wicket away 10 minutes after lunch is not missing a clutch moment. That's stupid cricket. Yeah. Okay. Next one, please. Next one, please. India needs second seamer because they want to manage workload of Bumrah. Otherwise, he will die by end of the series. But to second seamer puts more workload on Bumrah by being option for second seamer. Vineet, option for a second seamer. यार जरूरत ही क्या है आपको सेकंड सीमर की? मतलब सुंदर को खिला लेते, ऐसा जरूरी थोड़ा ना, कहीं लिखा थोड़ा ना कि आपको दो ही सीमर खिलाने हैं। कोई आईसीसी आपको आप पे कोई पेनल्टी पॉइंट्स होना नहीं लगाएगा कि आपने दो सीमर नहीं खिलाए। देयर वाज नो नीड, यू कुड हैव इजीली प्लेड अ सुंदर। और जैसे आई टोल्ड यू यस्टरडे, दिस क्वेश्चन वाज पुट अप टू बुमराह कि क्यों मुकेश को लिया गया, ही सेड कि रोटेशन पॉलिसी। व्हाट रोटेशन पॉलिसी यू आर टॉकिंग अबाउट? सिराज ने 11 ओवर कराए थे यार, क्या रोटेशन करना है आपको? यू शुड इजीली हैव बीन सिराज। आवेश को भी ले लेते अगर आपको सीमर ही खिलाना था। मुकेश इन दिस कंडीशन डजंट मेक सेंस। आई वुड से एक्स्ट्रा सीमर की जरूरत ही नहीं थी यार। वाशिंगटन सुंदर को ही ले लेते, यू गिवन यू दैट बैटिंग डेप्थ। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओवर एंड ओवर अगेन, बट अब जरूरत नहीं थी। फर्स्ट सेकंड सीमर को जरूरत था? आई डोंट थिंक सो। आप सुंदर को खिला सकते थे, सेकंड सीमर आपको खिलाना ही था। यू शुड हैव बीन बेटर ऑफ विद मोहम्मद सिराज। और ट्राई आवेश खान, अब ट्राई करने की बात है, मुकेश कुमार को भी ट्राई किया तो माइट एज वेल हैव गॉन विद आवेश खान आल्सो। सिराज वुड हैव गिवन यू दैट यार। आई डोंट नो हाउ मच रिवर्स स्विंग का कितना उनको वो है, बट विद दैट पेस ही probably would have been able to do something. मुकेश तो उस पेस से कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। James Anderson with his skill is wobbling. He's not reversing the ball that much as Bumrah is, but he with wobble seam से वो कर रहे हैं, एक टप्पे पे खिलाए जा रहे हैं. That was what is required from Mukesh Kumar. That was the thing that was needed from him. Consistency. एक ही टप्पे पे खिलाते रहो भाई, आगे खिलाए हैं, सारे आगे खिलाए जा रहे हैं। एक ही टप्पा पकड़ा लेकिन आगे खिला रहे हैं बस। Yeah, true. Okay, Jamie, I'll end this session with a prediction from your side. कल penultimate day, what do you have to say? क्या होने वाला है? If Jasprit Bumrah can do half of what he did yesterday, it should be India's match. If Jasprit Bumrah has a bad day, you're talking about. Chalo, let's go back to the initial target, 399. 399 on this track against this bowling attack. If it doesn't do the job, I mean, New Zealand can get 400 in 2 days, right? Australia can get 400 in 2 days. You're talking about Bazball. Bazball will get it in 1 day if certain factors don't work. To me, it's down to Bumrah and Kuldeep Yadav. Very rightly, who's talking about the bounce? Chetan was talking about the bounce. Two batsmen, one not so well set, Ben Duckett, the other very well set. They tried to reverse sweep today, Shubman Gill being the other, and they got out. If that bounce, I don't have any faith in Mukesh, with all due respect to whatever. I know he averages 21 in first class cricket. If that bounce has to be exploited, to my mind, it's Bumrah. But like Chetan said, if reverse is not coming till what, 35 overs, you said, that's going to play into England's hands. And if Kuldeep cannot exploit that bounce, it's going to be very tough. I was made to look like an utter idiot by saying on this channel
after day 2 in Hyderabad कि ये मैच गया काम से. I'm not going to be that idiot again. India have the better chance, but this match is far from done. Okay. Let's just hope it goes because अगर नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम्स है, सीरीज में भी होने वाली है और WTC को लेकर भी होने वाली है. Well, thank you gentlemen for joining me in this one. We'll connect again. We'll talk again about this match. Bye bye. Good night. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.